Hello and welcome back to our channel, guys. So today we are here to give you few last minute tips for your CEED and UCEED exam, which is going to happen tomorrow. So without wasting much of the time, we'll start with the GAT section. And yes, Alright, the aptitude section, you all know it is of 200 marks in UCEED. Now, it is segregated in three different parts. So first of all, the first advice what we give to the students anywhere, that they go through the question paper well. Before doing that, make sure you put your name, roll number, whatever is required at the very beginning, because some of the students, they miss the chance and do not even get the chance at the end of the exam. So better prepare with these things and then go through the question paper well. Now, if you have a strong area, like let's say you are very good at maths or GK or reasoning or observation based questions, first attempt those questions, right? That's the motto of the exam and that's the funda of the exam, I would say. Now when you start, when I say that it is segregated in three different parts, so the first 14 questions will be of 4 marks, which is numerical ability test or numerical answer type, I'm sorry. So numerical answer type, it doesn't have any sort of option. You have to solve the question and then you have to answer it, right? So here so many students does this mistake, that as you do not have 4 options there or 5 options there, you end up making mistake in the calculation. All right, so numerical answer type, always make sure that and it doesn't have any negative marking, the first section, so always attempt those questions, right? Multiple select question. So basically here if the question has 3 correct answer, and if you have chosen 2 correct answer, still you'll get a marks, not 4 marks totally, but obviously 2 marks. But not even a single answer or single option should be incorrect. So let's say it has 3 options as a correct answer, A, B and C, but you have chosen A, B and D. In that case, obviously A and B is correct, but here the answer should be C, the third one, but yours is D. In that case, the total answer will be incorrect and you'll attract a negative marking. So this is how the negative marking works in UCEED in MSQ. Now the third section, which is MCQ, again starting from question number 29 or 30 goes up to the end of the paper. It is of 3 marks, right? It will always have 4 or 5 options, and again here it will have a negative marking of 0.71. so even a single answer which is an incorrect answer will attract 0.71 in negative, and if you have the correct answer, it will attract 3 numbers straightforward. So last year the cutoff for general category was nearly 62 or 63, so try to make up to that standard. And syllabus we have already mentioned in our videos. I am sure you all are ready with this, because tomorrow is your exam. So I hope you prepare well, or you have already prepared well. And I'm taking this to Sanyukta ma'am for the creative part. She'll be speaking further. so firstly let's start with UCEED, where the pattern has changed. As you all know, पहले 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे और सिर्फ एक क्वेश्चन आता था. अभी 100 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, आएगा इनफैक्ट, एंड देयर विल बी 2 क्वेश्चंस. नाउ दीज 2 क्वेश्चंस, they can be from perspective, composition, problem solving, product design, conventional and unconventional designs, logos, posters. यहाँ से कहीं से भी आपके ये 2 questions हो सकते हैं. So what all things are important to know? Firstly, सबसे पहले कि there is no coloring and sketch pens and any wet medium is required. आपको बिल्कुल भी कलर्स नहीं करने हैं, जैसे कि आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन किया हुआ है. You don't have to take colors. And the second most important thing is time management, where 30 minutes plus 30 minutes you will have to divide these 2 questions in 2 parts, जहाँ पे आप 30 मिनट्स में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए एंड नेक्स्ट 30 मिनट में आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए. नाउ अगेन हियर गाइज, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है 30 मिनट्स में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की, देन डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम टुमारो. बट अ साइन ऑफ रिलीफ वुड बी कि कलर्स आपको नहीं बोले जाएंगे करने के लिए, तो कलर्स की तो रिक्वायरमेंट है नहीं. बट येस,
अगर मैं लास्ट मिनट टिप की बात करूँ, अगर ये वीडियो मैं 1 वीक पहले बना रही होती तो मैं आपको यही बोलती कि आप 30 मिनट्स का टाइमर लगा करके हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। बट अभी के मोमेंट में मैं आपको ये बोलूँगी कि अभी भी आपके पास कुछ घंटे बाकी हैं। इफ़ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई तो आप अपना टाइमर लगा करके 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो 30 मिनट्स ईच, ताकि आप कल उसको सॉल्व कर पाओ। प्लस मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगी कि कैसे क्वेश्चन को अटेंड करें। अगर आपने पहला क्वेश्चन कॉम्पोजिशन से रिलेटेड सोचा है करने का, तो आप उसको पहले बेसिक स्केचिंग से और पूरे पेपर पे उसको आप बना लीजिए एंड देन गो टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को भी आप बेसिक स्केचिंग से जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं उससे आप उसको बना लीजिए एंड देन सेकंड राउंड में आप फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स दे गिव देयर 90% एफर्ट्स ऑन क्वेश्चन नंबर 1 बट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता। सो इस केस में ऐसा होगा कि अगर आपने दोनों क्वेश्चंस को बारी बारी इक्वल टाइम दिया है तो आप दोनों क्वेश्चंस अटेंड कर पाओगे। एंड येस, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू UCEED. Now I want to discuss about CEED also. सीड में आपको पता है कि देर आर 5 क्वेश्चंस एंड आपको उसके लिए 2 आवर्स का टाइम मिल रहा है एंड द एरियाज आपको पता है। आप अगर वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको एरियाज बता दिए गए हैं और मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। द एरियाज आर गोइंग टू बी फ्रॉम स्केचिंग, फ्रॉम डिज़ाइन सेंसिटिविटी, फ्रॉम फॉर्म सेंसिटिविटी, फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द क्रिएटिविटी। ये 5 एरियाज हैं, तो इन पाँचों एरियाज से एक एक क्वेश्चन आता है एंड आपका गैट 100 मार्क्स का है, दैट विल बी डिस्कस्ड बाय सर। बट क्रिएटिव आपका यहाँ पे 200 मार्क्स का है। सो एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स, 20 मिनट्स अगर हम ईच क्वेश्चन को दें तो आपका ये पूरा का पूरा 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो सकता है। एंड अगेन यहाँ पे भी आपको कलरिंग की शायद रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लीज़ सी गो थ्रू योर एडमिट कार्ड। एंड अगर आपने मॉक्स लिए हुए हैं तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। अगर आपने मॉक्स नहीं लिए हैं कहीं से तो प्लीज़ गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स विच इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ IIT। सो वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड yes, over to Avinash sir. Now, if I'll talk about the aptitude part section of CEED exam, here the challenges are different. The first 8 questions will be of 3 marks, and again it is numerical answer type, and it doesn't have any negative marking. That is a sigh of relief for all of you. Again, moving forward from question number 9 to question number 18, again it is MSQ, that is multiple select question. Here the value of every question is of 3 marks and every wrong answer will attract 0.2 negative marking. Going forward, again if I'll talk about this next part, which is after like question number 19 till the end of the paper, it has the value of 2 marks each question and every wrong answer will attract a negative marking of 0.5 marks. So you'll have to be very careful when you are actually answering MSQ and MCQ. It does have negative marking and it impacts on overall score which you do. So you'll have to be very careful. So go through the question paper first, attempt your stronger area, leave the weaker area for the end, and attempt those questions at the very end of the exam. So that was it for the CEED UCEED last minute tips for the 2024 entrance exam. If you have any sort of question, if you have any concern, you can put your doubts in the comment section. We'll love to reply you there. Please do share, like and subscribe this channel. At the very end, I would say that if you really want to talk or get help from us, you can also follow us on Instagram, which is SS Design House. Do follow us before sending a DM because it always goes to spam if you do not follow us. So I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Bye bye.